Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Tarisius Vision. In last class, I have told you about the definition of Romanticism, that what actually the Romanticism is. In addition to it, I have told you several years in which major incidents of Romantic age and the writers and their literary works appeared at that time. So in today's lecture, we move further and I am going to tell you some other definitions regarding Romanticism and the political situation of France at that time. Because I have told you in 1789, French Revolution occurred in France. And what happened in this year? On 14th July 1789, the citizens of France burnt the Bastille prison. This prison was notorious for its atrocities done to the prisoners that lived here, that were cased here, and they set fire to this prison, and it embarked a journey of democracy. In the leadership of Napoleon Bonaparte, the France became constitutional monarchy later it. So here in Romantic age, we see that this age begins with the publication of lyrical ballads in 1798. It was a joint effort of Samuel Taylor Coleridge and William Wordsworth, in which Wordsworth contributed 19 poems and remaining 4 were contributed by S.T. Coleridge. But before beginning to literature, I am going to tell you about the political situation of France at that time, because it was France, due to the problems of that country, the Romanticism was started in England, because the slogan of French Revolution, liberty, fraternity, equality, were used in this age. The writers of this age started using their liberty. Liberty from what? Liberty from classical bondages that were put by Puritan authors. Now they started writing about nature. They started writing about the personal conceptions of their life. They started depicting those people who were marginalized before it. So I have already told you that the time period of this age was only 34 years. But this age, this Romantic age, is most read age in English literature. There's a famous book. I'm going to tell you the name of this book, The Romantic Imagination. What's the name of the book? The Romantic Imagination. Kindly note down the name of this book, The Romantic Imagination. The Romantic Imagination. And who is the author? The author's name is C.M. Baura. C.M. Baura wrote this book, The Romantic Imagination. And whenever you are going to write anything about Romantic age, whether it is research synopsis or any research paper or any thesis, this book is the Bible of Romantic age. It is called, because it represents all the characteristics that were happening. What was the reason behind that? What actually the meaning of Romantic age was? What actually the meaning of being Romanticism was? I have told you the line of Shakespeare, that the lunatic, lover and the poet are of imaginative all compact. And I have told you that what actually it symbolizes. It symbolizes that these 3 species notice all the things, all the characteristics of their personal object, which a normal person can't. Means a lover sees whatever he sees in his beloved, or the beloved sees in lover, it is unnoticed by the parents or the society. And what else? Lunatic hates, loves, fights, quarrels with his sage, and he is seeing those things
in it says that a normal human being can't. And this is the situation of author with. The author also sees many things that a normal person can't. That's why S.T. Coleridge, in his famous book Biographia Literaria, has defined the imagination into two parts. The first is primary imagination, and primary imagination is possessed by all normal human beings, all common human beings. But one more is there, and that is secondary imagination, that diffuses, dissipates in order to recreate. There's one more word. I will tell you later in the class what it is. It is a kind of imagination which is only available to authors and scientists. Common human beings can't see all these things that are seen by the authors and scientists and other literary genius. So let's come to the point, and I'm going to tell you the political situation of France at that time. First of all, see the line of Shakespeare. So in Shakespeare's play A Midsummer Night's Dream, there is a character whose name is Theseus. Theseus comments that love and imagination are similar. Love and imagination are similar. What else he said? He uttered the line, the lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact. And I have told you in my previous class that what actually this line symbolizes. The lunatic, the lover, and the poet are of imagination all compact means these three belong to the same instinct. And how? I have told you already. So here one more thing about Romanticism is a realism for romanticists. For romantics, that what actually we perceive as being romantic, getting romantic, is actually the realism for those authors. Whether he is Wordsworth, P.B. Shelley, or Coleridge, Keats, they all had established their imaginary world, and that particular world was their reality. For them, these world were the reality. And for us, for common being like us, those words are like a kind of imagination, or we can say these are the romantic world. But never be confused with the word romantic. Getting romantic or being romantic doesn't mean that you are going to make love with someone or you are in love with someone. You may be, no doubt, undoubtedly you can be. But being romanticism, getting romanticism are some other meanings too, and those meanings are much more important than to this. Hence Wordsworth opted nature. His realistic world was nature, natural world. Whether he is in Tenta Navy, whether he is the land of daffodils, whether he is seeing the French Revolution, whether he is seeing Peter Bell, whether he is seeing Lucy, who is nourished by nature. Everywhere he talks about nature. In his famous poem Tenta Navy, he says that nature did never betray the man who loved her. Nature did never betray the heart, that loved her. Means nature doesn't have cheat, fraud, betrayal, because it is the purest phenomena of this world. There's no any kind of mysticism. Yes, there is, but this mysticism never cheats, never makes fraud with anyone. And nature endows blessings to human beings without any discrimination. She can even choose an illegitimate child like Lucy. 3 years she grew in sun and saw. Nature said a lovelier flower on the earth was never sown. She will be sportive like a fawn. Lucy हिरन के बच्चे के जैसे फुर्तीली होगी, ऐसा वर्ड्सवर्थ ने लिखा. So Wordsworth reality was nature, but for us
This was a kind of romanticism. And now we have next author, who is S.T. Coleridge. S.T. Coleridge saw the reality in the supernatural world. He didn't remain in natural world. He made his realism in supernatural world. In his famous poem, the Rime of Ancient Mariner, he's talking about he's talking about a mariner who was saved by some sailors in sea. And why? Because he killed a bird. He was in a problem, and God sent a bird whose name was albatross. Albatross came and became his path facilitator. But unknowingly, that mariner took his sword and killed that bird. And he committed the sin. And not only he, the entire crew of that ship became the sinner due to that action. But later he expiated his sin and was saved by some other sailors of a different boat. So S.T. Coleridge believed in supernatural world. Keats, a chameleon poet. Chameleon poet means he preferred, or we can say he took the color of those particular things about which he was talking. वो जिस पे अगर वो ग्रेसियन अर्ण की बात कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो ग्रेसियन अर्ण बन गया है. इस तरीके की उसकी एबिलिटी है. P.B. Shelley also belonged to natural world. And why he is famous? He is famous for his kinetic images. He sees future in his poems. He sees a future in his poems. We look before and after and pine for what is not. In our saddest dream, there's some pain fraught. Uttered by P.B. Shelley. Famous poems: Ode to the West Wind, Ode to a Skylark, and many others. Charles Lamb belonged to the personal world. He talked about his childhood, his manhood, and his schools everywhere. Where he worked, he represented all those things in his essays. And ultimately comes Jane Austen. Her novels belongs to domestic novels. There's no any great villain. There's no any great villain like Iago or any other great happening in the novel. In reality, her novels belong to the marriages and love affairs. And we perceive all those things dominant in her novels. So this was about being romanticism, realism for romantics. So now let's move further and see the history of France at that time. French history. The city Paris was in a state of alarm on 14 July 1789. क्या था? पेरिस जो शहर था वो क्या है? वो एक अलार्म की सिचुएशन में था, मतलब चौकन्ने थे लोग कब 14 जुलाई 1789 को. कारण क्या था कि उस समय लुई 14th के, या मेरे ख्याल से 16th हैं, उनके अगेंस्ट क्या हो रहा था? वहां पर लोगों ने ये ठान लिया था कि आज हम बेस्टिल की जो प्रिजन है, यानी कि जो जेल है, उसको हम आग लगा देंगे. और क्यों? क्योंकि ये जो जेल है वो मानी जाती थी कि वो बहुत ही ज्यादा खुखार जेल थी अपने आप में. काला पानी की सजा, जैसे मैं आपको बताता हूं हमेशा, इस टाइप के हालात वहां पर जेल में हुआ करते थे. और वहां के लोगों ने बिल्कुल ठान लिया था कि आज इस जगह को हम लोग तबाह करके रहेंगे. एंड द किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स. राजा ने क्या किया था? उसने ट्रूप्स को आदेश दिया था टू मूव इनटू द सिटी, कि वो क्या करें? शहर की ओर चलें, शहर की ओर मूव करें. रूमर्स एंड अटैक ऑफ पीपल ऑन बेस्टिल प्रिजन. क्या था वहां पे? अफवाहें थी. अफवाहें नहीं, सच बात थी कि आज क्या होगा? आज बेस्टिल जो है प्रिजन पे क्या हो जाएगा? हमला हो जाएगा. इसलिए राजा ने क्या किया था? उसने आदेश रखा था कि सेनाएं आज उधर की ओर कूच करेंगी. अब आगे देखिए, अ डेस्पोटिक प्लेस. बेस्टिल की जो जगह वो कैसी थी? डेस्पोटिक प्लेस थी फॉर प्रिजनर्स. किनके लिए? वहां के जो कैदी थे उनके लिए. Fragments were sold, and when they set fire to this prison, the fragments and remainings of that prison were sold in the markets to all those who wish to keep the souvenir of its destruction. Means
They set fire to the prison and many things that were there like locks, ताले या कुछ और भी चीजें जो कैदी इस्तेमाल करते थे, उनको क्या किया गया, उनको बाजारों में ले जाकर के बेच दिया गया। एक अलग तरीके का सौवेनिर रखने का यहां पे कॉन्सेप्ट था कि सिंबलाइज कर रहा है कि हाँ, इसको हम देख करके याद करेंगे कि किस तरीके की यातनाएं वहां के लोगों को दी जा रही थी। तो आगे देखिए, लुई 14th, इन्हीं के बारे में बात हुई। लुई 14th had put burdens of debts on country due to following reasons। क्या हुआ था कि आप समझिए कि लुई 14th ये हुई क्यों? फ्रेंच रिवॉल्यूशन was an outcome of a hatred, and what kind of that hatred, what kind of that animosity was? This was because there was the discrimination among people। यानी यहां पे लोगों के बीच में एक भेदभाव की जैसी स्थिति थी। जो वहां पे इलीट क्लास थी, जो वहां के बड़े लोग थे, वो तो टैक्सेस से एग्जेम्प्टेड थे, उनको एग्जेम्प्ट किया गया था, और इनके सारे जो भी इनकी खर्चे होते थे या जो भी इनको चीजें हुआ करती थी, इनका पूरा का पूरा जो है भरपाई, जो हर्जाना होता था, वो जो सबसे नीचे क्लास थी, लोअर क्लास, जो मर्चेंट, सोल्जर्स और सारे काम करने वाले लोग थे, उनको भरना पड़ता था। और यही रीजन था कि फ्रांस जब इस चीज को जो है सह नहीं पाता है। दिस इज एक्चुअली द थियरी ऑफ मार्क्स। थियरी ऑफ मार्क्स, व्हाट मार्क्स सेज दैट द लेबर क्लास इज ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड। हु इज द लेबर क्लास? क्लास प्रोलेटेरियन, सर्वहारा ग्रुप। वो हमेशा से क्या करता है? यातनाओं को सहता है, और फिर क्या होता है, लेकिन वो मालिक का अपने विरोध नहीं कर सकता है। कारण क्या है कि वो अगर विरोध कर देगा मालिक का अपने, तो उसमें हालात कैसे बन जाएंगे कि वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाएगा। That's why there's a kind of spark in his heart, and later slowly this very spark becomes a fire। एक आग में तब्दील हो जाती है। और यही हुआ यहां फ्रांस में। जनता जब सब तरीके से, बहुत फेमस मैंने पढ़ा था कहीं पर, क्या हुआ था कि राजा जो है वो अपनी पत्नी को, रानी को लिवा करके जा रहा था, और रानी जो है फ्रांस की जो थी, जब वहां पे लोग पीछे दौड़ रहे थे तो वो रोटी रोटी चिल्ला रहे थे। दे वर आस्किंग फॉर ब्रेड ब्रेड, रोटी रोटी, वो चिल्ला रहे थे। तो रानी ने कहा कि अगर रोटी नहीं है तो बटर क्यों नहीं खा लेते। मीन्स शी वाज एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन हर कंट्री, एंड इवन किंग didn't notice all these things because he was merciless. He didn't have pity in his heart that people of France are dying of hunger and they are roaming in the city, and even queen, so much sophistication in her heart. See, kitna दिखावा है, not a bit sensitive about the pity, about the bad condition of poor people. That what are you saying? That eat butter if you don't have bread. If someone doesn't have capability to purchase bread, so how can he purchase butter? But this very thing was unknown to queen, because why? She was of an elite family, and elites don't have the knowledge of such things. वो कहते हैं जेके पैर ना पड़ी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। वही वाली बात थी यहाँ पे, ऐसे ही था सब कुछ। आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्टेज जो थी यहां पे वो किसकी थी? क्लर्जी। क्लर्जी यानी कि पादरी लोग, हमेशा से एंजॉय करने वाले। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन यहां पे आप एग्जेम्प्टेड कर दीजिएगा, एग्जेम्प्टेड टू पे टैक्स बाय बर्थ। जन्म से ही अधिकार था। क्या करेंगे आप? आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। यू कैन एंजॉय एनी प्रिविलेज ऑफ द कंट्री, यू कैन एंजॉय एनीथिंग, बट यू आर नॉट गोइंग टू पे टैक्सेस। एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड टुडे, and the worst of India, where the people who are rich, they don't pay taxes, and they always have their income in black. But the person who is in job, government one after another impose taxes and taxes, and he is made to pay all these debts, all these taxes. And here we have our clergy. Clergy. Why? The France was a Roman Catholic country. France was a Roman Catholic country,
and they did not have Protestant. Even today, they are Roman Catholic. So the privilege that they enjoyed since the beginning of Christianity, they were enjoying that privilege even that time too. And even today, they are enjoying. So now we have second stage, nobility. Nobility belonged to those people who were courtiers. Who were courtiers, यानी राजा के दरबार में जो थे, उनके मिनिस्टर्स, मंत्री या कोई और पोस्ट पर, वो भी क्या थे, उनको भी क्या हुआ था, they were also exempted to pay taxes. कोई कर नहीं, आप एंजॉय करिए एकदम जिंदगी को. But later come the third stage. Not later, there was a third stage in which there were merchants, peasants, kisan, soldiers, सैनिक. They were obliged to render services to the Lord. यानी कि ये obliged थे कि आप क्या करेंगे, आप पहले और दूसरे स्टेज के लोगों की सेवा करेंगे. To work in the house and fields, आप उनके घरों में काम करेंगे और खेतों में काम करोगे. To serve in the army, और आप क्या करेंगे, आप सेना में भी आप ही काम करेंगे. आज भी आप देखेंगे इंडिया में ज्यादातर जो सैनिक हैं वो क्या हैं, वो ऐसे ही घरों से आते हैं, बिलोंग करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा रिच जो है लोग नहीं हैं. जो रिच हैं, जिनके पास पैसा है, दे डोंट सेंड देयर चिल्ड्रन इन आर्मी. इंस्टेड ऑफ इट दे प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू बी इन द सर्विस ऑफ ईदर इंजीनियरिंग और मेडिकल्स और बिजनेस or any other field that have much money, but they don't send their children in army because that is a dangerous place according to them and also doesn't have much money in it. So see the discrimination here also was the same thing. And what happens, so these people, the discontentment of these people led the French Revolution that occurred in 1789. There were some philosophers also. Who were they? Montesquieu is a famous philosopher of that time. Jean-Jacques Rousseau and his statement, his slogan, back to nature, प्रकृति की ओर वापस चलो, was followed by Wordsworth. उनका ये जो नारा था कि प्रकृति की ओर वापस चलना है, वो फॉलो किया गया किसके द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा. ने back to nature and slogan and advocated, he advocated a form of government, कि सरकार का एक ऐसा प्रकार होना चाहिए जो कि किस पर बेस्ड, आधारित होगा ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. यानी जो लोग हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट के टाइप की गवर्नमेंट हो, ताकि किसी को भी, जो भी नेता बन रहा है, उसके पास लिबर्टी ना हो कि वो जनता को अपने मनमाफिक एक्सप्लॉइट करे. अब आगे देखिए, और इसीलिए ये जो फिलोसफर्स आए, दे डिस्कस्ड देयर फिलॉसफी इन सलून्स. जहां भी वो थे उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो सलून जहां पर क्या हो रहा है, बाल कटवाने लोग जा रहे हैं, सेव कराने जा रहे हैं, वहां पर इन लोगों ने अपनी फिलॉसफी को बताया कि हम ऐसा चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस टाइप की हो. और कहां पर, इन कॉफी हाउसेस का चलन फ्रांस से ही आया था यहां पर. और क्या, एंड वाज रेड अलाउड. और क्या किया इन लोगों ने, इन्होंने तेजी से अपनी फिलॉसफी को पढ़ा फॉर द इलिटरेट पीपल. ऐसे लोग जो क्या थे, निरक्षर थे, उनके लिए इन्होंने तेजी से पढ़ करके अपने कॉन्सेप्ट को बताया कि हम ऐसा चाहते हैं. एंड इन 1791 में फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र की ओर बढ़ता है. विमेन, औरतों क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड, वो निराश थी अभी तक. क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट हैव द राइट ऑफ सफ्राजेट, मींस दे डिड नॉट हैव voting rights. They did not have voting rights, means they cannot choose their representative. And this was the very situation of England also. Even after the passing of 3 reform bills in England, first reform bill 1832, second reform bill 1867, third reform bill 1884. 3 reform bills were passed in British Parliament, but the women did not get their voting rights. They got their voting right in approximately or probably
मेरे ख्याल से 1918 के आसपास या 1908 में उनको ये मिला हुआ था। सो नाउ कम टू द पॉइंट। एक्टिव सिटीजन्स, यहीं पे कुछ और एक डिवीजन था। ये ऐसे सिटीजन्स थे इंटाइटल टू वोट, जिनको वोट देने की अनुमति थी। अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन, यानी 28 मिलियन में 280 लाख लोगों में से केवल 40 लाख लोगों को अनुमति थी वोट देने के लिए, यानी पुरुषों को भी ज्यादातर करके वोट देने का अधिकार नहीं था। आगे देखिए, पैसिव सिटीजन का एक कॉन्सेप्ट था। ये कौन थे? नो वोटिंग राइट्स, इनके पास क्या है? अधिकार नहीं है वोट करने का। अबाउट 3 मिलियन मेन, इसमें कौन थे? 3 मिलियन 30 लाख आदमी, विमेन औरतें थी, चिल्ड्रेन बच्चे थे, एंड यूथ बिलो 25, ऐसे लोग, ऐसे यूथ जिनकी उम्र 25 साल से कम है। मींस हु आर द एक्टिव सिटीजन्स? एक्टिव सिटीजन्स वर दोज पीपल हुज एज वाज 25 और अबव टू 25, 25 साल से ऊपर होंगे आप, तभी आप वोट देने के अधिकार में आते हैं। यानी 40 लाख लोग बस थे जिनकी ऐसी उम्र थी। अब आगे देखते हैं, सिटीजन अबव 25, 25 साल के ऊपर जो लोग थे, पेड टैक्सेस इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेजेस। कितना आप सोचिए डिस्पैरिटी थी। 6 दिन काम कर रहे हैं बेचारे, 3 दिन का तो टैक्स ही दे रहे हैं। इतना ज्यादा स्थिति खराब है, इतनी ज्यादा बुरी कंडीशन है उस देश की कि 6 दिन की कमाई में 3 दिन का तो गवर्नमेंट को ही टैक्स देना, तो यह बिल्कुल गलत था एकदम से। अब आगे देखिए, ओनली रिच फैमिलीज विमेन हैड एक्सेस टू एजुकेशन। हमारे यहां की तरीके से, इंडिया की तरीके से क्या है? केवल धनी परिवार की महिलाओं को ही एजुकेशन यानी शिक्षा को लेकर के अनुमति थी बस। इन 1946, 1946 में विमेन वन द राइट टू वोट। ले आप देख रहे हैं कितना देरी में, 1946 यानी कि 47 में देश आजाद होता है इंडिया, उससे 1 साल पहले केवल फ्रांस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। और यही लगभग क्या था टाइम इन सब का भी, इंग्लैंड का भी, 1908 या 1918। अब आगे देखिए, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं पढ़ता हूं आपके लिए। The beginning of Romantic period in English literature is dated with the publication of Wordsworth and Coleridge's The Lyrical Ballads। ठीक है, 1798 में ये पब्लिश होता है लिरिकल बैलेड्स। द टाइम पीरियड फ्रॉम 1785 to 1798, यानी यहां से यहां तक का जो दौर है उसे माना जाता है नोन एज द एज ऑफ ट्रांजिशन। बदलाव का दौर था। ओलिवर गोल्डस्मिथ, विलियम कॉलिंस, विलियम ब्लेक, थॉमस चैटरटन, थॉमस ग्रे एटसेट्रा आर कॉल्ड द प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिक एज। मैं पढ़ा चुका हूं आपको इन लोगों के बारे में। इन 1789, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रेज्ड इन फ्रांस, यानी फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है 1789 में। द वर्क्स ऑफ जॉन जैक्स रूसो, याद रखिएगा स्पेलिंग, रूसो ROUSSEAU, ठीक है, रूसो क्या हुआ, एंड विलियम गॉडविन, बताइए आपको कौन है? पीबी शैली के ससुर जी विलियम गॉडविन हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति पर इनका बहुत ज्यादा क्या था? प्रभाव था। रोमांटिक्स क्या हुआ है? वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी इनका जो कॉन्सेप्ट था कौन सा? लिबर्टी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और क्या? बैक टू नेचर, ये सब चीजें जो थी उनसे प्रभावित हुए कौन? रोमांटिक्स। और देखिए, द रोमांटिक पोएट्स आर द मोस्ट एंथोलॉगाइज्ड एंड स्टडीड पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे ज्यादा इन्हीं को ही पढ़ा गया है। अब देखिए, रोमांटिक पीरियड और रिवोल्ट और रिएक्शन, ये क्या था? एक रोमांटिक पीरियड एक रिवोल्ट या रिएक्शन था। कैसे? इसके पहले का जो लिटरेचर है न्यू क्लासिकल का, वहां पर हम बात कर रहे हैं किसको लेकर के? इलीट। उसकी जगह पे यहां पे क्या है? कॉमन मैन। कॉमन मैन यहां पे क्या है? रेशनैलिटी गवर्न कर रही है, रेशनैलिटी, विट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? सटायर्स लिखे गए यहां पे, और यहां पे उसकी जगह पे इमोशंस। यहां पे ऑब्जेक्टिविटी है, अपने बारे में नहीं लिखा किसी ऑथर ने,
यहां पे क्या है, सब्जेक्टिविटी रोमांटिक ऑथर्स में, वो अपने बारे में लिख रहे हैं, पर्सनल लाइफ के बारे में बता रहे हैं। और क्या है, और यहां पर हेरोइक कपलेट है, हेरोइक कपलेट। यहां पर क्या है, फिर से ब्लैंक वर्स, यहां पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या है, रेस्ट्रिक्शंस, यहां पर फ्रीडम है यानी कि आजादी। तो ये सब सारे क्या हैं, ये सारे रिवोल्ट हैं या रिएक्शन हैं किसके खिलाफ, नियो क्लासिकल एज के खिलाफ, जो भी बॉन्डेजेस थे उस टाइम पर। देखिए, द रोमांटिक पीरियड वाज रिवोल्ट और रिएक्शन अगेंस्ट द रूल्स और bondages of the literary tradition of neoclassical period. It was revolt against racial authorities too. यानी कि क्या है, एक ये रिवोल्ट था against racial authorities too. It was a reaction against reason, diction and meter etc. of neoclassical era. यानी ये जो मीटर मैं आपको बता ही रहा हूं, वो सब उनके सब के खिलाफ भी क्या था, एक रिएक्शन था। रोमांटिक एज इज रिवाइवल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे क्या था, ये एक रिवाइवल था किसका, इंडिविजुअलिज्म का भी। ये वही इंडिविजुअलिज्म है जो एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज में ऑथर्स ने एंजॉय किया। बट आफ्टर द कमिंग ऑफ नियोक्लासिकल एज और वी कैन से रेस्टोरेशन एज in England, they were denied of this concept, means they cannot talk about individual emotions or feelings because of puritanic concept in the country. But now they got freedom. On one hand, France got freedom from this kind of monarchy, and here the authors got freedom from classical restrictions. Romanticism, imagination and feelings that were in existence in Elizabethan period, जो कि कहां पर थी, एलिजाबेथन पीरियड के टाइम पर अस्तित्व में थी। thus इस तरीके से in this period, इस पीरियड में we find extraordinary development of imaginative sensibility। हमको क्या मिलता है, एक अलग ही सेंस ऑफ, समझे, सेंसिबिलिटी। यहां पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेटिव सेंसिबिलिटी और इमोशनल लाइफ। सब्जेक्टिविज्म केम इन लिटरेचर। दीज थिंग्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आई हैव टॉक्ड यू, that I have told you about these things, that this was a particular age in which the authors once again started writing about subjectivism. They were subjective, they were individual, they talked about emotions, they represented common men, they represented animals, they talked about trees, nature, everything. And all these things were denied to the neoclassical authors. But this was a kind of liberty from all kind of restrictions and bondages that were put by the authors who were their precursors. Sorry, predecessors. अब यहाँ पे the special stress on imagination sometimes led the romantics away from the humdrum world of actuality and its hectic problems. That thing I have told you. वो यहां से क्यों भाग रहे थे, यहां से इसलिए भाग रहे क्योंकि ये जो असल की दुनिया है, रियलिटी की, यहां पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, द्वेष है, ठीक है, यहां पर बहुत सारा धोखा, चीट, हर इंसान स्वार्थी, इन सब चीजों से भाग करके वो अपनी एक इमेजिनेशन की दुनिया बना रहे थे, एक कल्पना की दुनिया, जहां पर ये सारी चीजें नहीं थी। और यहां पे देखिए, प्रॉब्लम्स टू मेक देम सिटीजन्स ऑफ देयर ओन रिस्पेक्टिव वर्ल्ड्स, दैट्स व्हाई दे बिकेम the citizen of their respective worlds. Wordsworth remained in the world of nature. St. Coleridge went into the supernatural world. He started taking opium much in quantity, and that's why he was very, his habits became very bad with the passing of time. St. Coleridge, Byronic hero, always lamented on his past, brooding over everything. So here, these humdrums, these problems, these situations led the romantics to be the hero of their own life, their own imaginative life, make them citizen of their own respective worlds of imagination. Means कल्पना की दुनिया का नागरिक हो जाना आपने, और कारण वही है, because there they saw the reality and
reality of this actual world was full of pain and fear, fraud, cheat, betrayal, everything. And in their respective world, there was just the blessings of nature and they enjoyed it a lot. So this was all about romantic age. This was all about romantic age that I told you today. In my next lecture, I will talk to you about William Wordsworth, who can be said the representative poet of the romantic age, and will talk you about his poems. In a little lecture, in a very short span of time, I will try to convince you about Wordsworth, William Wordsworth. So it was all for today. See you soon in my next lecture. Thank you so much for watching. ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर अपने लाइक और कमेंट के जरिए बताइएगा.